Hello everyone, this is Abhishek Mohanty and you are watching Padarth Vigyan. So friends, in this video we are going to discuss about a very important topic. This is important as well as informative video for all the OAVS aspirants, PGT aspirants. So the topic is about the roles and responsibilities of PGTs working in OAV. Since you are applying for the PGT post in OAV, you must know what are your roles, responsibilities, and what duties you have to perform once you join as a PGT in OAV. I have listed down 7 points and I will explain about all those points one by one. So I request all of you to watch the video till the end so that you will get a fair bit of idea about your duties, roles, and responsibilities. So let's begin. The primary job of a teacher is to take classes. So the first point in my list is the number of classes per week. ता माने गोटे पीजीटी गोटे वीक रे केतेरा क्लास नबो एंड ए भिडियो रे मु डिस्कस करबी अबाउट पीजीटी फिजिक्स पीजीटी केमिस्ट्री पीजीटी बायोलॉजी पीजीटी मैथ एंड पीजीटी इंग्लिश पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी इकोनॉमिक्स से मु डिस्कस करबी नाही बिकॉज़ सब स्कूल रे कॉमर्स स्ट्रीम ओपन हेनी सो सब स्कूल रे पीजीटी कॉमर्स किबा पीजीटी इकोनॉमिक्स नथिबे सेति पई मु केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ आउ इंग्लिश ए विषय डिस्कस करबी. So first I'm going to discuss about PGT physics, chemistry and biology. So PGT physics, then chemistry and biology. तो जो मैंने ए पोस्ट रे जॉइन करिवे सेमानक पई पर वीक केतेरा क्लास रहिबो एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फुल फ्लेजेड स्कूल जो थरे कि क्लास 6 रु क्लास 12 पर्यंत अछि. So the PGTs will have to teach from class 9 to class 12. Class 9 ru class 12 पढ़ेबे. So in class 9th there are two sections A and B. Class 10th रे सेम थिबो two sections A and B. This is compulsory. बाकी क्लास 11th रे किछि किछि स्कूल रे सिंगल सेक्शन थिबो आ किछि स्कूल रे डबल सेक्शन थिबो. So the best case scenario आमे नबा डबल सेक्शन A and B. Similarly, in class 12, there will be double sections, okay, A and B. 12 for A and B. ठीक है. So, if you are a PGT physics or PGT chemistry or PGT biology, how many classes you have to take in 1 week? So, class 9th रे each section रे you have to take 3 classes. A रे 3टा class, B रे 3टा class. तो केते हो टोटल 6 हे गेला. सेमती क्लास 10th रे भी A रे 3टा क्लास B रे 3टा क्लास अगेन 6. 11th रे in each section you have to take 8 classes. So 6 classes will be theory and 2 classes will be practical. तो टोटल केते 8टा क्लास हला. तो A रे 8टा B रे 8टा 16. सेमती 12 रे A रे 8टा B रे 8टा केते हला 16. So total केते हबो 16 plus 16 32 32 plus 12 एटा हेजबो केते 44 classes. त माने गोटे वीक रे you have to take 44 classes and गोटे वीक रे there are 6 working days. तो 6 working days रे you have to take 44 classes. 6 working days equal to 44 classes. तो each working day रे केते पडिबो around 7 point something. त माने सबुदिन 7टा क्लास कंपलसरी रहिबो. इन सम डेज यू हैव टू टेक 8 क्लासेस. अब मन रखंतु ओएवी रे जो स्कूल टाइमिंग थाए दैट इज फ्रॉम 9:30 टू 4:30 एंड ए जो टाइम भितरे कोन हुए असेंबली हबो देन शॉर्ट ब्रेक अछि 10 मिनिट रो गोटे लॉन्ग ब्रेक माने जो लंच ब्रेक अछि 30 मिनिट्स रो तो ताको छाडला परे बाकी जहा टाइम बंचिबो सेथिरे टोटल कथा हबो 8टा पीरियड हबो. तो पर डे देयर विल बी 8 पीरियड्स. And out of 8 periods, if you are PGT physics, chemistry or biology, you have to take minimum 7 classes or 7 periods per day. And in some days, you have to take 8 classes also. तो जदि आपण जो स्कूल रे जॉइन करिवे जदि से स्कूल रे 11 आउट 12 रे डबल सेक्शन थिबो देन यू हैव टू टेक 44 क्लासेस कंपलसरी. ठीक अछि. ता सहित जदि कोनसी टीचर एब्सेंट थिबे एंड किछि अरेंजमेंट क्लास थिबो यू आल्सो हैव टू टेक दैट क्लास. ओके. तो ताकू मु बे माने एथरे किछि इंक्लूड करूनी.
ताकू छाड़ला परे यू हैव टू टेक 44 क्लासेस पर वीक बिकॉज अरेंजमेंट क्लास टा डेली आसीबनी सेटा जदी टीचर एब्सेंट थिबे एंड जदी आउ के भी अवेलेबल नथिबे देन सेटा आपन को ऊपर पड़ी पारे ता सहित in some schools there will be remedial classes okay तो remedial class जदी तांकर माने सपोज जो माने अछंती लो अचीवर कि तांको पई remedial class हला then remedial class टा हुए either morning रहबो किंबा after 4:30 हबो so that depends upon the respective school तो ताकू भी आकु मेथरे इंक्लूड करूनी तो टोटल कथा हो टोटल हबो 44 क्लासेस but if you are PGT mathematics then you have to teach in class 11 and class 12 only because प्रत्येक OAV रे TGT math दुई जन अछंती and they will manage from class 6 to class 10 the PGTs will take classes 11 and 12 and class 11th re you have two sections A and B in class 12 you have two sections A and B and again you have to take 8 classes per section the 8 plus 8 plus 8 plus 8 32 so total you have to take 32 classes okay next we'll discuss about PGT English so if you are a PGT English then you have to teach in class 11 and class 12 because like mathematics in each OAV there are two TGT English so they will manage from class 6 to class 10 so the PGTs will teach in class 11 and class 12 so 11th re you have two sections in 12 you have two sections ठीक है so according to the OAVS guideline you have to take 5 classes in each section so total कथा हबो 20 class हबो 20 classes per week ता सहित depending upon the availability of staffs in some schools you have to teach in some lower classes like class 8 हो किबा class 9 हो किछि class करे को पड़ी पारे सेटा माने सेटा केस टू केस वेरी करिवो फ्रॉम स्कूल टू स्कूल वेरी करिवो बट जोटा मो एबे को सेटा होची मिनिमम दैट इज द मिनिमम नंबर ऑफ क्लासेस you have to take so this is about the number of classes per week so you can see that if you are joining as PGT physics chemistry or biology then you have to take maximum number of classes so be ready for that next point कोन आसीबो the updating of lesson note so आपण डेली जहा पढौथिबे you have to keep a record of that क्लास 9th रे कोन पढेले क्लास 10th रे कोन पढेले 11th रे कोन पढेले 12th कोन पढेले and कोन सब क्वेश्चन डिस्कस कले एवरीथिंग हैज टू बी kept in a record जहा हम कहचे lesson note so updating lesson note is also very important next point la kon na checking the homework copies of the students so after each class you have to assign some homework to the students and you have to also check it regularly which is normal thing number 4 रे कोन अछि monitoring the progress of each child so आपण जो सब क्लास रे पढौथिबे क्लास 9th 10th 11th 12th जोटी पढौथिबे आपनक सब्जेक्ट रे गोटे स्टूडेंट बा गोटे चाइल्ड केमती परफॉर्म करूची इन ईच एग्जामिनेशन PT1 PT2 PT3 PT4 हाफ ईयरली एनुअल तार प्रोग्रेस आपन ताको मॉनिटर करिवे ठीक अछि आपन गोटे रेकॉर्ड रखिबे गोटे कॉपी रे आपन लिखिबे PT1 केते रखितला मार्क PT2 रे इंप्रूव हेची ना मार्क कमिची जदी इंप्रूव हेथिबो गिव सम feedback so that he can improve more जदि तार किछि परफॉर्मेंस कमिछि देन तार रीजन कोन ताकू एड्रेस करिबा एंड यू हैव टू गिव प्रॉपर फीडबैक टू द स्टूडेंट्स सो मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ ईच चाइल्ड इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वाइटल mentoring of students so monitoring and mentoring they are complementary to each other तो mentoring माने कोन ना क्लास 9th और क्लास 9th थ्रू क्लास 12 ए जो एज थाए दिस इज ए vulnerable age teenage को कहूचे and in this age they are prone to many mistakes सेमानकर psychological thinking अलगा थिबो their emotional health is also in a different level so you have to understand each and every child so जेति की टोटल स्टूडेंट थिबे क्लास एंड दिस मेंटरिंग इज
स्पेशली फॉर क्लास 10 एंड क्लास 12 बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स। तो क्लास 10 और क्लास 12 रे जेते स्टूडेंट्स थिबे एंड जेतेटा टीचर से क्लास रे पढुथिबे ताको भितरे डिवाइड करा जिवो। सपोज आपणक माने आपणक पाळी रे पढिबे 10 to 12 स्टूडेंट पढिबे, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दोस 10 to 12 स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेंटर देम। ता माने कोन ना सेमानकर जहा सब प्रॉब्लम थिबो यू हैव टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम। एंड मेंटरिंग सबट मोस्ट इंपोर्टेंट जिनसला कोन ना the students should be they should feel comfortable in sharing their problems with you. So you have to be very friendly with them so that whatever problem they have they can share that with you. And once आपण सेमानकर problem जानला परे you have to mentor them, सेमानकु आपण ताकू आपण सपोर्ट करिवे इमोशनली। एंड जदि एकेडमिक्स किसी प्रॉब्लम होची देन यू हैव टू आल्सो हेल्प देम हाउ टू ओवरकम दैट डिफिकल्टी। एंड मेंटरिंग टा जेहेतु गोटे सेंसिटिव पार्ट, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड इन दिस मेंटरिंग प्रोग्राम। तो आपणक अंडर रे जो 15 20 कि 10 12 जति भी स्टूडेंट्स थिबे यू हैव टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। और मेंटरिंग रो आउ गोटे नीड कोन जो ना क्लास 3 जोटा कि लिखाई छि पॉइंट नंबर 6 लिखाई छि ensuring 100% pass result in board exam. Since OAV is a flagship program of our honorable CM, so the main aim of OAV is to ensure 100% pass in board exam. So you have to give your best to ensure the 100% pass result, and for that mentoring is also very important. You have to address difficulties faced by the student. Suppose कोन सब्जेक्ट से डिफिकल्टी फेस करूची, you have to tell that thing to the concerned teacher जे एई स्टूडेंट रो एथरे प्रॉब्लम होची, so that that teacher can give some extra time, some extra feedback to the student. So this point number 6, ensuring 100% pass result, is quite challenging because जदि गोटे भी छुआ फेल हेजिबो then you cannot achieve this goal. So as a teacher you have to give your best, you have to give your 200% in ensuring this 100% pass result. तो जहाँ भी मेथड अच्छे आपण ताको अप्लाई करि परिबे, but you have to ensure this thing. This is one of the biggest responsibility of the teacher. नेक्स्ट आसीबो कोन ना सम एक्स्ट्रा चार्जेस। सो अपार्ट फ्रॉम दिस एकेडमिक चार्जेस आउ किछि भी चार्ज आपन को दिया जाई पारे जोडा कि माने नॉट कंपल्सरी फॉर एवरीवन, मे बी आपन को सेना मिल पारे, लाइक सीबीएसई इंचार्ज हला किंबा एग्जाम इंचार्ज किंबा एडमिशन इंचार्ज किंबा आउ जहा भी सब ड्यूटीज थिबो किछि चार्ज थिबो सेटे भी आपन को दिया जाई पारे। And if you are a lady teacher, if you are the senior most lady teacher in your school, and जदि आपनको स्कूल रे गर्ल्स हॉस्टल अच्छी, then you will be the superintendent of that girls hostel, so that is an extra charge. But ए जो सातेटा रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी कहली सेते सब इंपोर्टेंट कोडा आसीबो ना the number of classes per week and the mentoring of students as well as the ensuring 100% pass result in board exam. So I think I have covered almost all the duties, all the responsibilities taken by the PGTs in OAV. तो सातेरा पॉइंट रहिला। So I think that you have got some fair bit of idea about what will be expected from you once you join in OAV. तो यदि वीडियो भल लगी वीडियो को लाइक करंतु, and if you are new to my channel then please subscribe to it and press the bell icon so that whenever I'll upload a new video you'll get notified. तो ठीक है जी, पुणे में देखा हुआ नेक्स्ट वीडियो रे with a new topic. So till then have a nice day and bye bye.